पढ़ें क्वेश्चन 20। जी नीचे करने से अभी तो मोटरसाइकिल डूइंग अ रेस नेक्स्ट है next. The motorcycle accelerates along a straight section of the track from a speed of 40 meters per second to maximum speed. Figure is the speed time graph for the motorcycle along the straight section of the track. इस क्वेश्चन कहते हैं मोटरसाइकिल एक्स लॉन्गेस्ट 40 मीटर 40 okay? So you have to find out the mass of the motorcycle is 180 from 0 to 2 seconds from 0 to 2 seconds 0 to second almost the graph is line. तो अब हम यहाँ पे कहते हैं the formula of acceleration ग्रेडियंट ले लेते फाइनल वेलोसिटी कितनी लग रही है आपको फाइनल वेलोसिटी इज कितनी है फाइनल वेलोसिटी इज 50 और 50 ले लेते 6 माइनस इनिशियल इज 40 6 minus 40 and the time is 2 चेक करें एक सेकंड से 56 minus 40 8 8 per second correct 8 yes you get 56 minus 40 16 divided by 2 8 yeah 0.0 here next is जी the resultant force acting on the motorcycle next is the resultant force आंसर चेक करेंगे क्या एक्सेलरेशन so question में 23 है ना 1.4 7.5 55 minus 40 किया उन्होंने सर होगा ना that's why 5 minus is per second the resultant force acting on the motorcycle F equals m F equals the mass acceleration 7.5 into is 7.5 into 8 60 60 सेकंड पार्ट है ना सर आंसर तो हाँ कुछ और आया हुआ है 180 से मल्टीप्लाई किया उन्होंने मैंने mass is 180 acceleration is
करें आपके आंसर। जी सर बस एक सेकंड। अब आता है 180 मल्टीप्लाइड बाई 7.5 1350 या 1400 बन जाएगा। 50 14 next हम्म। is the driving force acting on about the 12 second time कितना spend on the straight second using figure 1.2 type how the acceleration क्या हो रहा है। अगर हम ग्राफ देखें 12 सेकंड तक ग्रेडियंट क्या हो रहा है, increase हो रहा है ना। gradient of speed time graph is so acceleration is and decreases because gradient of gradient of speed time graph decrease. Next, explain in term of the forces acting. Why the acceleration? कहते हैं कि ऐसा ग्राफ क्यों बन रहा है? Why the acceleration is changes in? हम्म। ये शेप मुझे बताएं इस टाइप सर ऑफ ग्राफ टर्मिनल वेलोसिटी। का मतलब अच्छा तो यही बताएंगे towards इसमें। the air resistance both become equal. The net force are to move and velocity. देखते हैं as the speed increases, नहीं सर। as the speed increases, the air resistance also increases. Also, the air resistance also increases in opposite opposite direction. And finally, yeah, eventually, air resistance become equal to the air resist air resist become equal to driving driving force. So resultant force and resultant force and acceleration become zero and cyclist
starts start moving with constant speed. तो ये आपने लिखा. Next is question number 20. Question number 24 में भी इस तरह ही कुछ. Figure 1.1 shows our lorry accelerating along a horizontal road. The driving force on the lorry, the forward direction. Driving force forward direction, and the total backward force on the lorry is. एक फोर्स आगे की तरफ लग रही है तो ड्राइविंग फोर्स कह रहे हैं. द वन फोर्स इज फॉरवर्ड डायरेक्शन. State and explain whether D or B is larger. State and explain whether D or B is the larger force. कौन सी ज्यादा होगी? जी हम्म बचे. 30 से ज्यादा होएगा ज्यादा होगा क्यों? क्योंकि फॉरवर्ड जा रहा है ना. ओके, ये देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है कि rate मतलब स्पीड ज्यादा हो रही है. इसका मतलब फॉरवर्ड फोर्स इज ग्रेटर देन द lorry accelerates so the force D is larger. Force is larger. Next, just one possible cause of the backward force की वजह से लग रही है. फ्रिक्शन. वे हाँ, कौन सी होगी? एयर रेजिस्टेंस का तो नहीं बता. तो हम यहाँ पे लिख देते हैं फ्रिक्शन बिटवीन बोर्ड एंड टायर. और मार्केशन हाँ, 24 का सेकंड पॉइंट. ए पार्ट टू. हाँ, एयर रेजिस्टेंस और एयर ड्रैग और फ्रिक्शन फ्रिक्शन तीनों बिटवीन बताए बोर्ड हुए. एंड टायर. और हम लिख देते हैं हम्म the weight of the lorry is 300,000 Newton. The gravitational field is calculate the mass W equals M. Have to find out. W is 300,000 and answer is 30,000. That is 30,000. Okay. हाँ जी. Next is the resultant force on the lorry is 1500 Newton. Calculate the acceleration. F equals to mass 1000. The acceleration is, oh, we have Oh, the force is 15,000. Mass is 30,000 equals A. अरे A क्या होता है? 5,000, 30,000. 15,000 over 13,000. 13 30,000. is 30. 30. 0.5. 0.5 meters per second. It returns a corner at a constant speed. क्या है बचे? Constant. Constant. Explain why the lorry accelerates even though the speed. पता नहीं. देखें, अब वो इस टर्न ले रही है कॉर्नर. जी.
कॉर्नर सर्कुलर और हाँ जी। centripetal force the center. Centripetal force is due to the change in direction. The body circle. The objective point. Although the speed is constant, but their direction, though the sp- but their direction that causes Mm. the direction of velocity continuation of velocity is although the speed is constant, but the direction of velocity that causes acceleration causes acceleration. Next है question number 25. Figure 10.1 shows electric train of mass 5.5 10 power 5 kg train initially at rest. So the electric motor exerts a constant force and the train accelerates. The acceleration decreases until the train reaches a speed of 40 meter per second. है? Mm-hmm. The 40 meter acceleration per second. Like, हाँ जी में आ जाता है initial speed is 0, final speed becomes 40. The train then continues at this constant speed or on the axis. Figure 10 point catch the speed time graph for तो आपने स्पीड टाइम ग्राफ बना लिया। देखें शुरू में आप शो करेंगे कि स्टोरी है अप टू 40 में इधर मार्क 1 इज 40 so initially the speed that decreases initially the speed increases and then decreases with constant. decreases with constant. कर्व आपने शो टर्मिनल वेलोसिटी हाँ जी। ग्राफ बना finally at 40 meter per second velocity. Okay. Next is describe how the speed time graph for the train is determine the distance traveled by the train when it is accelerating. जी बच्चे ग्राफ को यूज करके हम कैसे फाइंड करते हैं Under the graph. the area Under the graph. area speed time determine the distance traveled by the train confusion. No, sir. No, sir. Next
Explain in terms of forces acting. Why the acceleration of the train? ये जो हमने पहले लिखा है. As the speed increases, air resistance also increases. It increases air resistance. Air resistance also Also increase. increases in opposite direction. Opposite direction. Yeah. So resultant force on the train decreased force and and resultant force of the train. Next is why the train eventually reached a constant speed. Why the train eventually reached a constant speed. Okay? When the air become equal, become equal and opposite opposite driving force, when the air resistance become equal and opposite to the driving force, then resultant force becomes zero. Resultant force become Mhm. then resultant force becomes zero and train start with constant. Next is calculate the kinetic energy of the train when the speed is one. Now have to find the kinetic energy of the train. जी बच्चे, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? Sir, kinetic energy का formula half काइनेटिक mv square. हाफ, तो आपने फॉर्मूला लिखना है हाफ mass of the train था 5.5, 5 velocity 40. क्वेश्चन कौन सा है आंसर की मैं भी खोल कर देख लूं सर 24 ही है तो आंसर आ गया 4.4 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 8 जूल्स कैलकुलेटर नहीं राउंड है ऑफ आपके पास? नहीं सर सर वो पता नहीं यहीं कहीं रहेगा 4.10 1 2 power. As the train accelerates to 40 meter per second, electrical energy supplied to the converted into kinetic energy of the train. The efficiency of the process 0.40%. Calculate the electrical energy supplied to the motor. Electrical energy supplied to the motor mean input energy is output energy put over input energy
put Energy. मल्टीप्लाई बाय, तो इनपुट को हम उधर शिफ्ट कर देते हैं, पुट पुट एनर्जी, पुट एनर्जी इक्वल्स पुट एनर्जी और मल्टीप्लाई बाय, Mm-hmm. तो इनपुट एनर्जी इक्वल्स आउटपुट एनर्जी अभी 40% आता। इसका समय कैलकुलेटर मिल गया सर, फोन से कर लेता हूँ कैलकुलेट. So 1.1 multiplied by 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 to the power 9. 1.1 multiplied by 10 to the power 9. 1.10 the electrical energy is generated in an oil chemical energy in oil converted into electrical energy applied to the motor. Uh, just two places where the energy lost as heat in this process. कहाँ कहाँ पे energy loss हो रही है? Electrical energy is generated in an oil fired power station. Chemical energy in oil converted to electrical energy. Have to show where the two at which places energy is lost. The first one is the ट्रांसफार्मर कुछ एनर्जी को यूज कर लेगा. वन Hmm. इज जी. ये था क्या? जी सर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर पढ़े. हाँ जी, so question number 26 है figure 9.1 shows a skydive of mass 70 kilograms falling towards the earth at constant speed a long time after jumping from an airplane. At t is equal to 0, he receives a radio signal. He opens his parachute 12 seconds later. Figure 9.2 is a speed time graph for the driver. स्पीड टाइम ग्राफ इज गिवन. द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी. The speed is scalar. पब्लिक द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज g. कैलकुलेट द वेट ऑफ द स्काई डाइवर. वेट इज वेट था 710 न्यूटन. confusion. No, sir. Next, second part is state the size of the air resistance acting on the skydiver between 0 to 12 seconds. 0 से 12 सेकंड तक. 12 सेकंड कांस्टेंट है ना. हाँ 12 जी. सेकंड इज 0. कांस्टेंट. 0 to 12 सेकंड the speed नहीं सर, रिजल्टेंट फोर्स भी तो फिर 0 नहीं होएगा. here as from 12 second नहीं सर, शुरू में उन्होंने रिजल्टेंट speed फोर्स के बारे में बताया हुआ बिल्कुल. constant क्या होता हुआ. कुछ बताया हुआ पूछूं से, क्योंकि सर एयर रेजिस्टेंस का पूछा उन्होंने. falling was हुआ at constant. इसको मैं अब देखिए 12 seconds speed is constant and we know that speed is only constant it become force. The speed is constant
weight become equals to the resistive force. Now, resistive force is equals to the weight, and we know the value of weight is 700 Newton. So 700 air मीटर resistance इसका is beyond. also 12 seconds, well, 700. For the जी. period between t0 to t12 second, the speed of the skydiver, ये आपने ग्राफ से देख, 0 to 12 is, here you have 54 meter per second of the sky. जी. The distance fallen by the skydiver, distance अब आपने 0 to 12 second, distance होता है area under the graph. तो distance under time graph, ग्राफ. हम करेंगे distance equals area under time graph up to 12. 12 बचे कहाँ तक बनेगा, यहाँ पे this half of the 10 and 50 is 12.5 ना, से एक बॉक्स भी यहाँ तक ही हो, हाँ जी. एंगल बन, अब आपने area of rectangle is 54 into 4 distance 4 54 into 12. हेलो, जी सर. हेलो. जी जी, 54 into 12 is 50 into 12 is 8. सर हेलो, आवाज आ रहा है सर? सर आवाज आ रहा है, पक्की बात है सर? 648. 648. 6 650 meters. Any confusion? No sir. Next is the change in gravitational potential energy of the skydiver. Potential energy का फॉर्मूला क्या होता है? Potential energy equals So mgh. potential energy equals m. M is the g, and height is 6. कर ले. 455000. 455 followed by 1 to 4.5 power 5. सर 4.6 नहीं आएगा राउंड ऑफ करके? आंसर देख लो, कर सकते हैं. नहीं, 4.5 ही हो. क्यों सर? चेक कर लो मार्किंग्स. क्वेश्चन नंबर 26 ही चलो अभी भी. सर इन्होंने 648 लिया आंसर. हाँ इन्होंने 648 लेकर फिर 4.53 आ जाता है ना? एग्जैक्ट वैल्यू ली 40, एग्जैक्टली लेना चाहिए ना वैसे. 48 और 5. नेक्स्ट इज एज ही फॉल्स एट अ कांस्टेंट, क्या है, कांस्टेंट है, और पैराट्रूपर ऊपर से नीचे, द स्पीड इज कांस्टेंट.
So it means there is no change in kinetic, kinetic energy constant. आगे कहते हैं his gravitational potential energy changes into other form. State the name of this other form of energy. अब कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक में तो कन्वर्ट नहीं होगा बिकॉज द स्पीड इज कांस्टेंट. नो चेंज इन काइनेटिक. काइनेटिक Heat एनर्जी रिमेन कांस्टेंट. हीट एनर्जी तो आप कह सकते थर्मल एनर्जी. well, energy. next is state and explain what happens to the air resistance as the skydiver open his parachute. प्लीज हो जाएगी ना. जी. Resistance increases due to larger area of the parameter. Large surface area is parachute. Any Mm-hmm. confusion? No, sir. Next, state and explain the effect on the motion skydiver of opening the parachute. Skydiver slow हो जाएगा ना. The skydiver skydiver slows down. Skydivers slows down due to increase in the net upward force. Net upward force. The net upward. Step by t second, parachute is fully open. State and explain what happens to the air resistance after 15 seconds. After 15, हाँ जी, ये है after 15 second क्या हो रहा है? After 15 second the speed decreases. Air resistance also after 15 second क्या होगा बचे? Air resistance proportional to the speed. यहाँ पे लिखते हैं after 15 second air resist after 15 seconds the speed decreases decreases. So air resistance also decrease. Air resistance also Mm. अच्छी part है. कहते हैं जी अब सर. a ball rolls down slope as 1.1. The meter rule shows the position at 1, 1, 2, and explain how figure 1.1 shows that the ball is accelerating. How you know that the ball is accelerating? Because in the first second covered by the ball is 10. है ना? जी. So how much the distance covered by the ball in the second? Uh, distance 40. 50 minus 20 is 30, not 40. Sorry, हाँ. And the distance covered by the ball in the third second is 100 minus 50. 100 minus 50 क्यों? Goes here, अच्छा. not 90. 100 minus 50 is तो डिस्टेंस ज़्यादा कवर हो रहा है जी. आफ्टर ईच सेकंड के कम हो रहा है. से ज़्यादा. हाँ जी, हम लिखते हैं द बॉल और डिस्टेंस. बॉल
cover more distance after second. Calculate the average speed of the ball between 1 and 3 seconds. Average speed. Average speed क्या होता है? Total over total time. Total distance जी 0 to second. Total distance कितना cover हुआ है बच्चे? Ball start from 10 centimeter 10 power minus. The time taken by the ball is करें क्या? 90 minus 10 to the power 2 minus 0.3. Point. 3. Next पढ़ें C part. Two of the forces that act on the ball are the air resistance and weight state. If anything happens to these forces as the ball accelerates? So, अगर ball accelerate or increase, Air air resistance resistance. increase So when speed increases, the air resistance also or weight constant रहेगा. increase. Air next is the weight. Weight is next. Explain why. If the slope is long enough, हो, the ball eventually reaches a constant speed. का मतलब है force cancel each other. कौन कौन सी forces लगे? The resultant force becomes the forces acting the ball come equal and opposite. Come opposite. Different different force and काफी है यहाँ तक. जी सर. आपने फिर मोमेंटम 1.5 और 1.6. ओके सर. इंशाल्लाह याद आएगा.